morning student, welcome to Gyan Bharati Junior College of Science. In the present chapter current electricity, we have seen in the last period the potentiometer, principle of potentiometer, and again we have seen some applications of the potentiometer. So here applications of the potentiometer, this potentiometer can be used as a potential divider arrangement. If we want to divide the potential difference between the 2 points of the potentiometer wire, we can use here the potentiometer apparatus. So for this first application, this potentiometer is used as a potential divider arrangement. So for this we can draw the electrical diagram like this. This is the potentiometer wire having the several meter long. This is the potentiometer wire AB, and here one the wire is given a positive terminal, and here resistance R is connected. This is the same source of EMF plus minus. And here is the jockey, and here is the pointer. This pointer divides the length, that is this L1, this is the L2. Means here is the galvanometer shows. So in this way we can divide the potential of this circuit. Means here when the jockey slides on the potentiometer wire, we can divide this potential between the 2 points. This is the L1 length, that means the galvanometer shows the zero deflection. So here the potential must be divided in between the 2 branches, that is the L1 length and L2 length. यहाँ का पे निकल के आएगा V1 इक्वल क्या होगा dL/dt निकल के आएगा, और यहाँ का कितना आया L1, यहाँ पे भी कैसा V2 इक्वल टू dL/dt ये भी निकल जाएगा. So in this way we can use here the what potentiometer as a voltage divider of the potentiometer. Secondly, it is used for the audio control. लो ऑडियो कंट्रोल में भी इसका यूज किया जाता है, और थर्ड एप्लीकेशन ही एज अ सेंसर में भी इसका यूज किया जाता है. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर. सो हियर अगेन एप्लीकेशंस के बाद देखना है आपको क्या एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर. एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर नंबर फर्स्ट. अब देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है. बहुत बड़ी 2 से 10 मीटर इतनी लेंथ ऑफ वायर होती है, इतनी लंबाई की, और ये क्या करता है, बहुत ही सेंसिटिव एपरेटस है. सो दिस इज द वेरी सेंसिटिव एपरेटस देन दैट ऑफ द वोल्टमीटर. सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. अगर तुमने छोटा सा पॉइंट टू पॉइंट अपन ने स्लाइड किया जॉकी को 10 सेंटीमीटर का 10.1 भी किया मैंने, तो इसमें सेंसिटिविटी ज्यादा दिखाता है, गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन. सो इट इज द मोर सेंसिटिव. दिस इज द मोर सेंसिटिव apparatus. Secondly, with the help of this potentiometer, you can determine the EMF of a cell or the potential difference between the 2 points of the potentiometer wire. So this is the advantage of the potentiometer. So EMF and potential difference ये भी मुझे क्या निकालते हैं डिटेल ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर. नंबर थर्ड, और क्या है कि ये पोटेंशियोमीटर जो है ये क्या है, हाईली एक्यूरेट भी है. एक्यूरेसी इज मोर, इट इज हाईली एक्यूरेसी. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द पोटेंशियोमीटर ओवर द वोल्टमीटर. इट इज मोर सेंसिटिव. It is used to determine the EMF as well as the potential difference, and with the high accuracy. But
But here is the disadvantage of this potentiometer is that potentiometer having the larger in size, whereas the voltmeter is compact in size. So this is the advantage नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इज द डिसएडवांटेज. अगर ये क्या है, हाई एफिशिएंसी 10 टू द पावर माइनस 6, जितना छोटा वोल्टेज भी अपन इससे मेजर कर सकते हैं. सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ द पोटेंशियोमीटर. आफ्टर दिस वी वांट टू शो हियर द galvanometer structure. So galvanometer, basically the galvanometer is nothing but the device which is used to detect the weak electric current in a circuit. ये क्या है, ये डिवाइस क्या करता है, it detects, this is finds, it note the weak electric current to detect weak electric current in circuit. इसके लिए यूज किया जाता है, क्या लिए, इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करने के लिए. इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करने के लिए एक एपरेटस का यूज किया जाता है. ये क्या है, गैल्वेनोमीटर. एंड दिस गैल्वेनोमीटर इज यूज आल्सो एज अ एमीटर, एज अ वोल्टमीटर, as a voltmeter and the ammeter. When it is connected in series or the parallel in the circuit, it will be behaves as an ammeter or the voltmeter. So here is the structure of the galvanometer is that the galvanometer consists of क्या, coil होगी, iron core होगा, and that is placed diagram. It consists of strong horseshoe magnet like this. This is the north pole, this is the south pole. ये ऐसे राउंड टाइप में बना जाता है. और यहाँ पे क्या होगा इसका, कॉइल, और ये रहेगा इसमें आयरन कोर. एक कॉइल, ठीक है. अब ये ऐसा इसे क्या होगा, करंट अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा इस तरह. और यहाँ पे रहेगा आपका क्या, स्केल. like this. यहाँ पे जो होगा 0, 10, 20, 30, 10, 20. यहाँ पे रहेगा हमारा पॉइंट. सो दिस इज द फ्रॉम horseshoe magnet. From horseshoe magnet, this is the coil. This is the iron core. ये जो है आयरन कोर. और ये क्या है, स्केल, कैलिब्रेटेड स्केल. और जितना नीड है, अगर पॉइंटर भी बोल सकते हो, दिस इज द पॉइंटर. This is the diagram of the galvanometer. The galvanometer consists of soft iron core over which the windings of the wire is aluminum wire winding. So from one of the end, the current is pass or enters in the coil, and to the other end, the current will be given. And this coil with the iron core placed in the between that of the strong horseshoe magnet. This is the north and south pole of the strong horseshoe magnet. So here is the calibrated scale, and the needle is connected
when the current passes to the coil of the galvanometer, it shows the deflection, and the pointer will be show the respective readings on the scale. So the deflection in the galvanometer is directly proportional current flowing to the circuit through the coil. मीन जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन होगा. सो दिस इज द पाइवोटेड कॉइल टाइप एंड द सस्पेंडेड कॉइल टाइप galvanometer. ये दो टाइप होते हैं. सो दिस इज द पाइवोटेड कॉइल टाइप galvanometer. अब एक galvanometer का यूज कैसे किया जाता है? galvanometer यूज एज एन एमीटर. ये तो मेरा स्ट्रक्चर हुआ. वर्किंग वाली तो आपको बताया हुई है. when the current passes through the galvanometer should be deflection because here is the coil and soft iron core. The coil will rotate about the soft iron core. Therefore here the needle should be respected readings on the scale. So this is the working of the galvanometer. And the deflection in the galvanometer is directly proportional to the current passing through the coil of the galvanometer. So here is the use of the galvanometer as the ammeter. Use as ammeter. अब galvanometer का यूज कैसे करते हैं अपन? यूज एज एन एमीटर. बट दिस इज द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस टू measure the current in the circuit. When the galvanometer is connected in series with the circuit, that device is called as the ammeter. But here, for the ideal ammeter, the resistance is negligible. It is equal to 0. 0 रहना चाहिए. But लेकिन practical ऐसे होगा नहीं. But again, for the ideal ammeter, the resistance must be 0. Resistance must be 0, and current may be infinite. So, the ammeter. अब ये कैसे यूज करते हैं अपन? So here is the coil passing the current I. Here is the resistor, and here is the galvanometer G. Means here is the again to this coil of the galvanometer a parallel resistor, that is the shunt is connected. This parallel resistor is called as the shunt. This is the galvanometer having the pointer like this. This is galvanometer, and here the current will be reduced on this is the this is the resistor R. और ये जो सर्किट मैंने बनाया है इसका क्या बोलते हैं? when the galvanometer is connected in series with the circuit. ये resistor R, current I, galvanometer का resistance G. ये क्या हुआ? shunt resistance means यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R is the external resistance. External resistance. Yes, is the shunt resistor. G, galvanometer resistance. I, current. Means when the current I is supplied to the circuit, means this structure is called as the ammeter. जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है अभी, ये क्या करेगा? यहाँ का एमीटर करके बिहेव करेगा लाइक दिस. ये होगा आपका क्या? दिस विल बी द आपका एमीटर. अब क्या क्या मैंने? द करंट फ्लोइंग टू द सर्किट flows to the resistor R, and at this point the current will be divided into the two branches. The one of the current flows through the galvanometer having the resistance G. Galvanometer का resistance कितना है? G. Capital G is the resistance of the galvanometer. Here to the parallel of the galvanometer, a shunt resistance is connected. Means the current Ig will be flows through the coil of the galvanometer, and the remaining current, that is the Is,
will be crossed to the shunt resistor. Means this current will be crossed again to the shunt resistor IS, and here the current will be IC. Complete current will be IC plus IS will be flown out of the circuit. Means मैंने whatever will be the current supply that will be come out of the gamma meter and the shunt resistor, that is I. अब क्या करना है कि जो at this point the current is I, that current is divided into two branches, that is IC and IS. Therefore here ये क्या होगा IC into G is equal to, यहाँ पे क्या होगा इसका रेजिस्टेंस yes IS, therefore IS into ES because equal to IR बनता है और 2 ohms का, therefore यहाँ पे but here IS is equal to IS कितना होगा टोटल दिया कितना हमारे करंट I, इसमें से शेड से कितना जा रहा है IS, बचा कितना है I minus IC बचा हुआ है, therefore IS is equal to I minus IC. ये कहां से जाएगा इधर से जाएगा, ये कितना हुआ IS बचा कितना I minus IC, अब क्या करते हैं पुट अप करते हैं यहाँ पे IS is equal to पुट अप किया हमने, therefore I minus IG1 remaining. Put this value, therefore IG into G is equal to IS का value I minus IG into ES. मुझे क्या निकालना है शंट निकालना है, therefore शंट में भी that is इधर में क्या हो IG into capital G upon I minus IG is equal to ES. So S is equal to what? Therefore S is equal to IC upon I minus IG into क्या हुआ G. So this is the value of the shunt resistance. ये क्या हुआ S is equal to IG upon I minus IG into capital G. So this is the value of the shunt resistance which is connected in parallel with the current. But here और क्या होता है कि I की वैल्यू here but I is equal to n times of the IC. I तो बड़ा है IC से बड़ा है तो कितना है n times बड़ा है. So put this value here, therefore this equation S is equal to IC upon I का वैल्यू कितना n into IC minus IC into S. ये इक्वेशन अब यहाँ पे क्या होगा IG कैन बी टेकन आउट, दैट इज द कॉमन वैल्यू, therefore IG अपॉन क्या हुआ ये क्या से IG निकलता था बाहर IG ब्रैकेट में क्या बचता है n minus 1 into G. ये IG कैंसिल हो जाएगा, मींस यहाँ पे क्या बचता G अपॉन दैट इज n minus 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ द शंट. यहाँ से मुझे G का भी वैल्यू बचता है G इक्वल टू S टाइम्स ऑफ द n minus 1 ऐसे होता है. S इक्वल टू शंट रजिस्टर S इक्वल टू G अपॉन n minus 1 where n is the number. So here S equal to G upon n minus 1. So from this S equal to IG upon I minus IG into G or S equal to G upon n minus 1. We can use this shunt resistor, and in this way if you put the value of the S in the circuit properly, then you will get the ammeter. Again here is the IG equal to क्या है IGG into IS into ES. But here यहाँ से मैं पहले क्या कहता IS की वैल्यू निकलती, but here but IG is equal to क्या होगा IG equal to कितना होगा I minus IS, therefore I equal to I minus IS. Putting this value in this equation, therefore it will become I minus IS into G is equal to IS into S. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, therefore IG minus IS into G is equal to IS into S. यहाँ पे क्या है IS है, यहाँ पे क्या है IS है,
ये IS की तरफ राइट हैंड साइड में लेते हैं, therefore IG is equal to क्या हुआ IS into S, ये माइनस का प्लस दैट इज IS into that ये IS कॉमन ले लेते हैं, therefore this IS in bracket S plus G। मुझे क्या चाहिए वैल्यू ऑफ IS अपॉन I चाहिए, therefore this will be the one that is IS upon I इधर नहीं जाता हूँ G upon क्या हुआ S plus G। So in this way again you are able to find the ratio of the shunt current to the pole current, means IS is the current flowing to the shunt resistor IS is the current flowing to the shunt means क्या है, ये पैरेलल में जोड़ा हुआ सा क्या है रजिस्टर है। सो हियर द रेशियो ऑफ द IS अपॉन I, दिस रेशियो IS अपॉन I इज इक्वल टू G अपॉन दैट इज S plus G। सो इन दिस वे यू विल गेट हियर द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग टू द शंट एंड टोटल करंट IS अपॉन I इज इक्वल टू G अपॉन S plus G। सो इन दिस वे the galvanometer can be included as the galvanometer is the so in the next grade we will see the voltmeter function. So thank you so much.